When a rape victim goes to the police station, she has to face that bias and humiliation. And the impact of Hudud laws, it lingered on for decades, even after they were abolished. In courtrooms, especially during cross-examination, the defense lawyers are going to first attack her character. So it's the entire system which is against the survivors. Generally, there has been underreporting in rape cases because of social stigma and other factors. But in recent years, reporting has increased, but a lot needs to be done. If we compare it with the level of conviction, it's not presenting a very good picture. The conviction rate in rape cases is really low and less than 4% according to the reported statistics. But after the creation and establishment of gender-based violence courts, it has risen to 16%, which is a good development. So Section 375 of Pakistan Penal Code, it deals with offence of rape. It basically says that a man commits offence of rape against a woman only if 5 situations are there: against her will, or without her consent, with her consent, but that consent is obtained by threat to life, or if the man knows that the woman is not married to him, yet she believes mistakenly that it's the man she's married to, and he has sexual intercourse with that woman, then that's also rape. This law is flawed because it does not cater all victims. The definition is only restricted to women, but what about men who get raped? And there has been amendment in the law, and now the law also includes that if someone has intercourse with somebody, with a boy under the age of 18, then that's also child sexual offence. But there is a lot of lacunae in the law. It does not cater for broad range of issues. For instance, duress is only restricted to threat to life or hurt. What about if someone is threatened that their children are going to be kidnapped, or duress to somebody else, threat to someone else's life? So law is silent on that. Hudud ordinance was also very problematic because the victims, they were very scared of reporting the cases, because there was a famous case of Safia Bibi who was a blind girl, and she was a domestic help at somewhere, and she got pregnant as a result of rape. But since the law said that you need to produce either 4 witnesses or you need to give ocular evidence, which is eyewitness testimony, and she was a blind girl, the law was against her and she instead was convicted of adultery. So this is grave miscarriage of justice, and not many women wanted to report in the first place because this had set a very बैड प्रेसिडेंट। ज़िया पीरियड में बहुत प्रॉब्लम रहा है लॉस का भी, और अगर वो ये कहते हैं कि जी पब्लिक हैंगिंग्स की वजह से कन्विक्शंस कम हुई या रिपोर्टिंग कम हुई, तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। एक केस था पप्पू, एंड ही वॉज पब्लिकली हैंग्ड इन 1982, और उसके बाद उसी सिटी में देयर वर 4 रिपोर्टेड केसेस of sexual violence. The impact of Hudud laws, it lingered on for decades, even after they were abolished. Even then the impact was there, and the judicial mindset is still against the survivors and against the victims. DNA की दुनिया भर में बहुत इम्पॉर्टेंस है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखें तो उसको कोरोबोरेटिव के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नॉट एज प्राइमरी एविडेंस। एक केस था सलमान अकरम राजा वर्सेस प्रोविंस ऑफ पंजाब, वेयर द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड कि DNA एविडेंस has to be collected and the sample has to be preserved. So they made it mandatory. अभी recently एक केस आया है अली हैदर पप्पू, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्ट्रॉन्गेस्ट कोरोबोरेटिव वैल्यू है DNA एविडेंस की। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है, जब तक आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स उसको प्रॉपरली कलेक्ट नहीं करते और सैंपल को टाइम पे नहीं भेजते, आपके पास सफिशिएंट लेबॉर्ट्रीज नहीं होती, तो तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। DNA अपनी वैल्यू जो है वो लूज़ कर जाता है। मुख्तारा माई केस में DNA सैंपल्स वर नॉट टेकन, तो दैट हैड एन इम्पैक्ट ऑन द जजमेंट।
बेसिकली दो तरह के लॉज होते हैं, एक ऑर्डिनेंस होता है जो प्रेसिडेंट पास कर सकते हैं विदाउट दैट बीइंग टेबल्ड इन द पार्लियामेंट। जैसे पहले ये बिफोर द एंटी रेप एक्ट बिकेम एन एक्ट, ऑर्डिनेंस पास हुआ था, लेकिन वो ऑर्डिनेंस का जो ड्यूरेशन होता है उसका 90 डेज होते हैं और 90 डेज के बाद वो लॉ लैप्स कर जाता है। इट्स गुड कि उस लॉ को 90 डेज के बाद एक्ट बनाया गया, बट नॉट एवरी ऑर्डिनेंस गेट्स स्टेटस ऑफ द एक्ट। तो ऑर्डिनेंसेस की वजह से लॉ में अनसर्टिनिटी रह जाती है। 90 डेज के लिए आप स्टेप्स लोगे, बट व्हाट इफ दैट लॉ इज नॉट लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सो दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ अनसर्टिनिटी। In fact, UNDP in 2020's report listed Pakistan on the top level in 75 countries when it comes to gender bias in courts and how courts are tilted against women, especially survivors of rape crimes. When a rape victim goes to the police station, she has to face that bias and humiliation. In courtrooms, especially during cross-examination, the defense lawyers are going to first attack her character because it really creates a dent on the prosecution case and also in the mind of the judge. And you don't just have to train the lawyers, the policemen, the prosecutors, the judges, the entire chain has to be trained. And their attitude is not serious enough. When they go in such conferences and trainings, they go with preconceived notions and preconceived biases. जो ज़ैनब अलर्ट एक्ट आया था, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट, वो ज़ैनब का जो इंसिडेंट हुआ था कसूर में उसके बाद आया, एंड जो मोटरवे गैंग रेप का केस था उसके बाद एंटी रेप जो एक्ट है 2021 का वो आया। एक चीज़ हमें याद करनी चाहिए कि ये लेजिस्लेशन पास की गई एज ए नी जर्क रिएक्शन में कि आपने पब्लिक को काम करना है। पब्लिक हैंगिंग्स हो गई, केमिकल कैस्ट्रेशन हो गई, उस पर इतना थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं था कि क्या ये ज़रूरी है, क्या कोई आप स्टडी कंडक्ट करें कि क्या इन चीज़ों का कोई डिटरेंट इफेक्ट भी है या हम सिर्फ एक अपीजमेंट के लिए कर रहे हैं। और एक और बहुत प्रॉब्लम आता है इम्प्लीमेंटेशन को लेके, आपने अपने बजट और फाइनेंसेस को मद्देनज़र नहीं रखा होता। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2016 की बात करें तो उसमें ये लिखा हुआ था कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस सेंटर्स बनाने हर डिस्ट्रिक्ट में, बट देयर इज़ ओनली वन डोमेस्टिक वायलेंस सेंटर। इसी तरह अंडर द ज़ैनब एक्ट उसमें यह था कि आपने प्रोटेक्शन एडवाइजरी बोर्ड बनाना है, जो कि अभी तक नहीं बना गया। Similarly, the anti-rape legislation of 2021, it states that you need to establish joint investigation teams होंगी और उसमें एक फीमेल पुलिस ऑफिसर का होना ज़रूरी है, बट ना तो JITs कॉन्स्टिट्यूट हुई, ना आपकी कोई गैजेटेड ऑफिसर्स आए। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एनी इनपुट फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री एज टू वेदर दिस पर्टिकुलर लॉ इज गोइंग टू बी सस्टेनेबल, वेदर इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ, then that law is not going to have its teeth. It's going to be a toothless law. लेकिन पार्लियामेंट में जब डिबेट की बात आती है तो प्रिडोमिनेंटली इट्स मेन, तो वो कहीं ना कहीं जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। मोस्ट ऑफ द वॉइसेस दे लैक रिप्रेजेंटेशन इन लॉ एज वेल। Recently, there has been progressive legislation. There was Women Protection Act of 2005, and the recent law, it's really good on paper. I'll give you one example. The Pakistan Penal Code states that if someone has sexual intercourse with a child, a girl child under the age of 16, it's rape. But at the same time, if the legal age of marriage is 18, so what about those who are in between age 16 and 18? So there's this confusion and contradiction in the law as well. So there has been progressive legislation, but there is certainly uncertainty in law, and implementation is the main issue, and there are certain lacunae which need to be filled. Thank you for watching the full video. आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा YouTube channel subscribe नहीं किया. So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.